Hello, 7th class. Today we will be going to start chapter 2 of our English grammar book, and the title of our chapter is Nouns. It's a very basic topic of English grammar. So, in this chapter, we will learn about nouns, kinds of nouns, formation of abstract noun, nouns as adjective, and nouns as object of preposition. So, let's start. Nouns. First of all, what is noun? We need to learn what is noun. Noun होता क्या है? Nouns are the name of person, place, animal, thing, ideas or feelings. In short, we can say that naming words are called noun, right? Noun किसे कहते हैं? किसी भी person, place, animal, thing, idea और feeling को जिसको एक नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. सो नाउन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे नेम एंड वेदर दे आर स्पेसिफिक और जनरल. सो नाउन्स आर क्लासिफाइड. नाउन्स को क्लासीफाई किया जाता है किसमें? ऑन द बेसिस व्हाट दे नेम, कि क्या उनको नाम दिया गया है, एंड वेदर दे आर स्पेसिफिक, और वो कोई स्पेशल चीज़ है या एक आम जनरल चीज़ हैं, फिजिकली प्रिसीव्ड, फिजिकली वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. या फिर एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दोज वी कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, वी कैन जस्ट ओनली फील दैम, कुछ ऐसा है. या फिर वी कैन काउंट दैम और वी कैन नॉट काउंट दैम, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो हियर वी हैव टोटल 7 kinds of nouns. The first one is common noun. What is common noun? It's a general names given to a person, place or thing. Common noun is a general name. Common name क्या होता है? एक कॉमन नाउन एक जनरल नेम होता है जो भी किसी भी पर्सन, प्लेस या वस्तु को दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बॉय, पार्क, चेयर, हॉर्स. इट कैन बी एनीवन. बॉय कोई भी हो सकता है, पार्क कोई भी हो सकता है, चेयर इट कैन बी वुडन मेड, इट कैन बी प्लास्टिक मेड, राइट. हॉर्स कैन बी एनीवन, कोई भी हॉर्स हो सकता है, राइट. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफिक नेम्स गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग्स. सी, कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम गिवन टू एनीवन, और प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफिक नेम. जब किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जॉन, हेयर बॉय कैन बी एनीवन, बट व्हेन वी रेफर टू अ नेम, जब हमने नाम की बात की, इट्स जॉन. सो जॉन इज प्रॉपर नाउन बिकॉज पर्टिकुलरली वी नो अबाउट द नेम. दिल्ली, इट्स अ सिटी. चेन्नई, Timmy, London. So you can see all these are names. These are specifically names are mentioned here. So these are proper nouns. And one more major difference between common noun and proper noun is this, that a proper noun always begin with a capital letter, whereas common noun has a small letter at the beginning. Okay, all right, until it starts from a sentence. So next is abstract noun. Abstract noun cannot be perceived by 5 senses like ideas, emotions, concepts and thoughts. Abstract nouns physically do not exist. We cannot touch them, we cannot see them, we can just feel them. For example, friendship, honesty, beauty, intelligence, okay. All these things you can just feel, you cannot touch them. Friendship can't be touched, honesty can't be touched, you can just feel them. आप इनको feel करते हैं, that is called abstract noun. So next is collective noun. Name of a group of nouns. When we give a name to the group of something, it is called collective noun. For example, army, it is a group of soldiers. Mob, nation, bunch, pile. All these are the examples of collective noun, right. Next is concrete noun. Things that can be physically perceived. Those things which we can touch and see are called concrete noun. In other words, we can say material noun. Abstract noun cannot be perceived, and concrete means material noun can be physically perceived. We can touch it. These things, concrete noun, physically exist. Okay, for example, milk, sugar, tea, bread, soap, you can see, we can touch them, we can see them. हम इनको देख भी सकते हैं और इनको टच भी कर सकते हैं. So this is called concrete noun or material noun also. The next is countable noun. Nouns that can be counted in numbers. Example, books, pens, pencils. Those nouns which can be count, like books, pens, pencil, all these can be count. इनको हम count कर सकते हैं. So these are countable nouns. And uncountable nouns, nouns that cannot be count in numbers. Those nouns which you cannot count in numbers, जिनको आप count नहीं कर सकते हैं, that is called uncountable noun. Like milk, sugar, tea, sand, all are you can just measure them. आप इनको measure कर सकते हैं, आप इनको count नहीं कर सकते. So this is called uncountable noun.
नाउ फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाउ टू फॉर्मेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स और वर्ब्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडजेक्टिव्स और वर्ब्स. वर्ब्स और एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं. लुक एट द एग्जांपल्स गिवन बिलो. सी, ऑनेस्ट इज अ एडजेक्टिव, लाइक ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एंड ऑनेस्टी formed by honest, we formed this honesty. Honesty means ईमानदारी. Laugh, हंसी, laugh means हंसना, and laughter हंसी. Laugh is a verb. Wise, बुद्धिमान, wisdom बुद्धि. Adjective, poor is also adjective, and poverty गरीबी. Obey means आज्ञा का पालन करना, and obedience means आज्ञा. Okay, so now next is, by this way we can form abstract nouns from adjectives and verbs. So nouns as adjectives. Sometime we use a noun, कई बार हम noun को to describe another noun, कई बार हम एक noun को दूसरे noun को describe करने के लिए use करते हैं. In that case the noun acts as an adjective, और उस case में जो noun होता है वो as a adjective क्या है, act करता है. जैसे कि examples are here. A suntan is a tan caused due to the sun rays. So a suntan, suntan is a noun here. A suntan is a tan. suntan एक ऐसी tan है caused जो कि होती है due to the sun's rays, जो कि sun की किरणों की वजह से, सूर्य की किरणों की वजह से होती है. A horse race is a race of horse. A horse race is also a noun, but it is telling, it is describing the other noun, right? So a horse race is a race of horses. A bookstore is a store of books. A car seat is a seat in a car. कार सीट क्या होती है? कार के अंदर एक सीट होती है. बुक स्टोर में क्या होता है? बुक्स का स्टोर होता है. सो हेयर यू कैन सी दैट अ नाउन इज डिस्क्राइबिंग टू अनदर नाउन. सो हेयर नाउन इज वर्किंग एज अ एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज नाउन एज ऑब्जेक्ट और of preposition. So prepositions are words that create a relationship between nouns and other words in a sentence. तो preposition are words that create a preposition वो words होते हैं जो एक noun का दूसरे noun के साथ में sentence के अंदर relationship create करते हैं. They also link phrases to the rest of the sentence. ये phrases को भी दूसरे sentences के साथ में लिंक करते हैं. Nouns that follow preposition are called the object of preposition. जो nouns prepositions को follow करते हैं वो क्या, उनको क्या कहा जाता है? That is called object of preposition. Now see example. From the beginning of the year I revised my work every day. साल के शुरुआत से ही, from the beginning, here beginning is acting as a noun. Of the year, and of is a preposition here, so it is connecting the other sentence, right? From the beginning is a phrase here. Of is connecting with the rest of the sentence. From the beginning एक phrase है जिसको कि of हमारी preposition यहाँ पे है जो कि connect कर रही है rest of the sentence, बाकी sentence को उसके साथ में. The year I revised my work every day. So beginning is the object of the preposition from, and the year is the object of the preposition of. English is most interesting subject for the students in our class. Students is the object of the preposition for. So here student is the object of the preposition for, and class is the object for the preposition in. Understood? कि student जो है वो object है preposition for के लिए, और class जो है वो object है preposition in के लिए. All right? Okay, I hope you understood the nouns very well, because it's a very old topic that you start learning from class 1. So now here I have worksheets. This is your homework. You have to do this yourself. Worksheet number 1 and worksheet number 2 I'm sending you. You have to do this yourself. Okay, in first worksheet what you have to do, circle the different kind of nouns in the following sentences and write their types. In this you have to circle the nouns. आपने nouns को circle करना है, and you have to write which type of noun it is. And in the other worksheet, fill in the blanks with the nouns of the words given in the brackets. The first one has been done for you. See, the same thing that I told you how to form abstract noun. You have to make the abstract noun. Okay, so do these first two worksheets yourself. Apart from the lesson, I am sending you the antonyms today, so write them in your notebook. Okay beta, total 20 antonyms we are going to do. Okay, so write the same in your fair notebook. Okay, thank you.